No, No, sir. sir. Okay. So second order RK method and 4K fourth order RK method. Second order involving 2Ks and fourth order involving 4Ks with the help of these formulas. Okay. So let us discuss the example on. So this second order RK method is not that much important, but you should know we can solve. Fourth order RK method is very, very important because that gives the correct solution. Right. So write down example. Write down. Actually, there is a remark for this RK method. The advantage of this method is that the operation is identical whether the differential equation is linear or non-linear. We can use the same operation, same formulas in case of linear or non-linear differential equation. All right. Do you know non-linear differential equations? You might have discussed these non-linear equations in mm, M2, right? While you have discussed about the first order, first degree differential equations, ordinary differential equation, in fact. So in that, the linear case, you might have discussed about the non-linear case also, um, how the non-linear equations are uh, differentiated. So any one of you, can you tell me what is meant by non-linear differential equation? Sir, can you tell one example? Example. Actually, that is what I'm asking. Non-linear, The, the difference, basic difference between linear and non-linear. Yes. sir, the degree of the derivative is 2 or greater than that. No, these are the higher order. Actually, if the degree is greater, then also there is no issue, isn't it? Still, we are discussing the differential equation of higher order and degree must be 1. But there is one more case. Okay, degree should not be greater than 1. That is also the thing, because if the degree is greater than 1, then what does it mean? We are having the derivatives in multiples, right? Derivatives in multiples. If the degree is 2, suppose, then that means dy by dx the whole square means what? Dy by dx into dy by dx, right? So dy by dx we are having in multiple. So such terms should not be there in equation. If such terms are there, then the equation is non-linear. So the non-linear differential equation means what? An equation involving the product of dependent variable and its derivative. Dependent variable. Suppose if we consider the dependent variable to be y, then y into dy by dx ऐसे term नहीं होने चाहिए, isn't it? Y into dy by dx, or there should not be, or there are the terms in product of the derivatives, the product of two derivatives, like dy by dx into dy by dx, or dy by dx into d2y by dx square, like this, isn't it? सर मतलब P of Q और Q of मतलब वो होते हैं ना LDA निकालते तो P of Q हाँ. और Yes. Q of वो सेपरेट सेपरेट होना चाहिए. नहीं, p and q are the functions of x actually, not the functions of dependent variable. So the Okay. standard form of linear differential equation of first order is dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, right? Sir, can you incline the camera? Standard form of linear differential equation of first order, first degree is dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, right? So here p and q are specifically functions of x only. They are not the functions of y. So there should not be the product of two derivatives like this. There should not be the product of derivative and its dependent variable like y into dy by dx. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है, then the equations are non-linear differential equation. And we have discussed, even in first unit also, we have discussed about linear differential equation. Clear to all? Yes, sir. So this RK method is applicable to both of these linear and non-linear differential equations. So write down example. Using fourth order RK method,
using fourth order RK method, solve the equation using fourth order RK method, solve the equation. dy by dx is equal to square root of x plus y. dy by dx equals to into square root x plus y. Subject to the conditions x is equal to 0, y equals to 1. Subject to the conditions x equal to 0, y equals to 1. And find y at x is equal to 0.2. I hope everyone is writing. And find y at x is equal to 0.2. Let or by taking h is equal to 0.2. By taking h is equal to 0.2. तो उल्टा अच्छा है हमारे लिए कि h is equal to 0 point दिया है. अगर h is equal to 0.1 दिया होता, then we need to find the answer in 2 steps, isn't it? So here the required value of y at x is equal to 0.2 and the difference or the step length is given to be 0.2 only. Okay, the equation is dy by dx is equal to root of x plus y. Nehul, equation is dy by dx is equal to square root of x plus y. Subject to the conditions x equal to 0, y equal to 1. To find y at x is equal to 0.2 when h is equal to 0.2. Okay. So it is specifically asked there, use the modified fourth order RK method. Sorry, use the fourth order RK method. So we have to use this. First of all, we have given dy by dx is equal to root of x plus y. Is it visible? Root of x plus y, where x is equal to 0 and y equals to 1. And we have asked to find the value of y at x is equal to 0.2 and given that s is equal to 0.2. Isn't it? So with the help of these two things, the given things, what is the solution? Is it clear to all that we have asked the value of y at the first step only? इसमें किसी को डाउट है? At first step only, because this is my x naught. X naught is 0.2. X naught is 0, right? X naught is 0 and h is given to be 0.2. So when I add into x naught plus h will be my x1. And what is x1 then? 0 plus 0.2, that is 0.2. And we have asked to evaluate the value of y at 0.2, means y1. Is it clear to all? So we'll get the answer in first step only. So by RK method, y1, y को मैं ऐसे लिखता हूं, y at x is equal to 0.2 will be equal, or I'm writing like this, y at x is equal to x1 is equal to y1, and that is nothing but what? Y naught plus k. Is it clear? Y at x is equal to x1 क्या होता है? y1, and y1 का क्या फॉर्मूला है by RK? Y naught plus k. Isn't it? Where I'm writing first of all the formulas, and then okay, where k is equals to what? 1 by 6 times k1 plus twice k2 plus twice k3 plus k4. Always try to write the formula so that you will not get confused to substitute the value. So where k1 is what? K1 is h times function at x naught, y naught. So what is my f of xy given here?
f of xy is given to be root of x plus y. Clear? So what will be k1 then? 0.2 into square root of x naught and y naught. So root of x naught One. plus y naught. So what is x One. naught? 0 plus 1. So square root of 1 is 1. So that will be 0.2 only. Yes? Is there any doubt? Someone is asking, I think. K1 is 0.2. Clear to all? Similarly, find the value of K2, K3 and K4 and substitute into K. That will be the required K, and when we substitute K into this, that will be the required answer. करो सब लोग चलो. I'm asking one by one to everyone. Hello, sir. हाँ. So y1 equals to 1.14621. Final answer. Okay, let me check. One point? 14621. No. I'm having y1 to be 1.2167. K1 is 0.2. What is K2? I think this is Harshal, na? Yes, sir. Yes. Okay. So what is K2? Sir, 0.219089. हाँ, correct. 0.219089. Correct. And K3? K3 0.219958. 99. 58. Actually, I'm having K3 to be 0.2120. Yes, sir. I will check once again. Sir, 0.219958 is rounded off to 0.220 only. 0.20. 0.22. Rounding off. हाँ 0.22 हो जाएगा वो. I'm having 0.2120. 2120 नहीं आएगा सर, राउंडिंग ऑफ करके भी. वही तो. Maybe my calculations. नेहुल तेरा क्या आ रहा है? तेरे वाले तो राउंड ही है, मतलब 9957. हाँ सर, 9958 ही आ रहा है. Okay. नेहुल का भी. K4. K4 0.2383. 2383. I'm having 2377. That is why the difference is. Let us हाँ check. तो Let's see if, let's wait for the others too. Then we'll fix the answer. Remaining students, please do reply in chat box at least. Your values of KIs and the final Y1. Abhijit, Anshika, Anuj, Ashwini, Atharv. Sir, K3 ची value is correct of Harshal. K3 is 0.2199. 0.2199. 2199 ही आ रहा है सबका. Yes, sir. Okay, then you can fix it. 2199. Sir, what is the value of K4? K4. K4 is 0.238 something. Harshal says. Sir, मेरा What about 0.2 sir 26 आ रहा है 0.2. 26. No, that is too much difference. Okay, okay sir, I will check. Okay. Bhushan, Ayush, Chinmay, Darshana, Gayatri, Khushi, Kritika, Kunal, Mahesh. Please do reply. Mayur, Prajwal. सर मैं आज का मतलब कल का थोड़ा बैक रह गए, तो फिर कल का देख के आज भी देखूंगा. तो मैं अभी खाली देख रहा हूँ कैसे. आज का मेथड मैंने एक्चुअली रिकॉल इसलिए किया ना
That is just a हाँ सर, formula. वो फॉर्मूला में मेरे को दिक्कत आ रही है, मतलब K2 इज इक्वल टू H इंटू एफ ऑफ x1 y1 ना, तो फिर K2 वो is y1 no, K2 is actually H into F of x1 y1, correct. Y1 जो है हाँ that हाँ y1 is by Euler's. ओके ओके ओके, मतलब वो y0 प्लस y0 plus H into F of x naught y naught by that. ओके Sir, सर is मैं Y1 1.2269? y1 Huh? 1.2269. Harshal, what about you? Is it the same? No, sir. 1.14621. 1.14, 1.22, too much difference. Okay, let's fix the value of k only. K का value fix करो चलो, and then we'll fix the value of y1. Abhijit is saying 0.216 बाकी लोग अपना सर K4 ची व्हॅल्यू काय आली 0.2383 0.2383 बराबर आहे. येस Come on fast, don't waste your time over the calculations only. It's just a matter of calculations. Maybe, or I'll suggest don't round off your values up to the last one, isn't it? You can round it to the last value, that is y1 or y2. Till that, don't round off. Sir, So y1 0.2193. 0.2196. 21 तो मेरा ही कुछ इसी के करीब आया था 0 point. It will not 0 point. 1 point It will always 1 point because y1 is already 1. 0 point कैसे आएगा? Sir, final 1.2192. 2192. हाँ, final 1.2192. I'm getting a 1.2193. Okay, 2193. येस सर 93. 2193 सेम So the value will be 1.2193. Remaining students, please check your calculations and correct the value. 1.2193 y1 to. So remember, the same question can be asked by giving h is equal to 0.1. Yes, sir, 1.2193. Okay. Let's fix the value of y1 to be 1.2193. But if examiner or if examiner want to ask the same question with the given things to be different, then he will change just h value. H will be either 0.1 or 0.05, isn't it? So agar 0.1 hota hai, then you'll get your answer in second step. Clear? मतलब अगर 0.1 है and you are getting this y1, so with the help of this y1 now write y2 will be equals to what then y1 plus k, and k के लिए फिर से आप ये formulas लिखोगे with the help of x1, because see here k1 का value क्या होगा in that case? K1 will be h times f of x1 y1, because while getting the value of y2 we are starting from x1 y1. Is it clear to all? We are moving from the point x1 y1, तो वही हमारा initial position होगा. Just like for y1, what is our initial position? x0 y0, isn't it? So for the next ordinate, the initial position will be x1 y1. For y3, the initial position will be x2 y2 and so on. Clear है सबको? Okay, thank you Shreyesh, Prathamesh, Sanket. 1.2193 will be the fixed value. Let's take one more example and then we'll proceed with the next method. Use RK method to evaluate, or use RK method to solve equation. Right on. You can directly write the equation dy by dx is equal to 1 upon x plus y. Use RK method to solve the differential equation dy by dx is equal to 1 upon x plus y with the same initial conditions. X naught is 0, y naught is 1. To find
to find y at x is equal to 0.4. Y at x is equal to 0.4 and h is given to be 0.2 only. चलो, जिसका हमें इंतजार था वही आ गया, है ना? सेकंड स्टेप क्लियर है सबको कि हमें y अभी कौन सा फाइंड आउट करने के लिए पूछा है उन्होंने? विच ऑर्डिनेट, फर्स्ट और सेकंड? Everyone, which ordinate to be find here? Second. Second ordinate, because here h is 0.2 and we have asked to find the value of y at x is equal to 0.4. तो 2 स्टेप तक जाना पड़ेगा आपको. चलो स्टार्ट करो. I'm giving 2 minutes. Is it possible to solve within 2 minutes? Yes, it is, right? Sir? That depends on the speed of calculations. सर वो कोऑर्डिनेट और वापस बता. मतलब सर वो y1 तक जाना है, y2 तक. हाँ, see here x naught is 0 given, right? x naught is 0. तो x1 क्या होगा? x naught plus h, right? This is x naught plus h. h क्या दिया है हमें? 0.2. So 0 plus 0.2 will be 0.2. So that is my x1. But we have asked to find the value of y at x is equal to 0.4. तो next क्या होगा? x1 plus h will be 0.4, right? That is x2. Yes, 0.2 x2 plus is 0.4. So we have asked to find the value of y at x2. तो y at x2 क्या होता है? y2. तो वहां मैं ऐसे लिखूंगा y at x2 is y2. y2 पूछा है. So y2 will be what? y1 plus k. तो आप क्या करोगे? पहले k का वैल्यू फाइंड आउट करोगे? नहीं. Do you know y1? Do you know y1? No, we No. don't know y1. So first of all, we'll find y1 by the same method and then we'll use that y1 to proceed for y2. Is it clear to all? तो y1 क्या होगा इसके लिए? पहले तो y1 लिखूंगा मैं, फिर y1 will be y0 plus k, isn't it? These k and this k is different, remember. वो कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशन. तो यहाँ इस k के लिए इनिशियल कंडीशन क्या है? x0 y0. व्हाट आर द इनिशियल कंडीशंस फॉर दिस k? x1 y1, isn't it? तो पहले तो y1 का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन यूज दैट वैल्यू ऑफ y1 फॉर y2. इज इट ओके? किसने पूछा था? Yes, sir. ओके. Sir, y at point 2 is 1.1714. मतलब y1 is 1 point. Just write your answer in chat box. 1714. चैट बॉक्स में लिखो सो दैट बाकी के भी लोग देखेंगे इसको. जिसको y1 मिल रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो प्लीज. मैं यहाँ थोड़ा सा स्टार करता हूँ, मतलब बाकी ये नेक्स्ट एग्जांपल है इसलिए. इसके बाद लिखो सब लोग y1 का वैल्यू. Prajwal is saying 1.1714. चलो, I'm expecting the answers from. कोई विक्रम था क्लास में? हमारे क्लास में कोई विक्रम है? आज तो नहीं है शायद. यश, वेदांगी, तेजस नाइक एंड तेजस कुलकर्णी, तेजस बिजवे. Everyone,
Drop your answer in chat box. Tamanna, Swaraj, Sumit, Shri Nalini, Shweta, Shubham, Shreyas, Kapre and Shreyas Dikshit, Shravani, Sanket, Samiksha, Rutuja, Prathamesh, Mahesh, Kunal Gaikwad, Kritika, चलो फास्ट। नेहुल, आप किसका वैल्यू डाल रहे हो यहाँ? इज इट y1? नो, y1 will not be 0.18 because y0 is already 1. तो y0 में एडिशन कर रहे हैं ना हम, लेस कैसे होगा फिर 1 से? वो प्लीज चेक वंस, वो शायद k का वैल्यू होगा। हम्म 1.1824, 1.1824 हर किसी का डिफरेंट आ रहा है, कैलकुलेटर्स डिफरेंट है शायद सबके। Shreyash is getting 1.22, 1.1695, 1.15। ओके, ये दोनों हो सकते हैं। ये हर्षल 1.62, सॉरी हाँ 1.62 एंड 1.14, ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना? हाँ 1.6 को ज्यादा हो रहा है सर, हाँ वही तो। क्रॉस चेक किया तभी भी नहीं आ रहा है। 1.1714, प्लीज डोंट राउंड ऑफ योर वैल्यूज, मतलब k1 k2 k3 k4 के वैल्यूज को राउंड ऑफ मत करो। जो जितने डिजिट्स आते हैं सभी डिजिट्स कंसीडर करो इन द कैलकुलेशंस। फाइनली यू कैन राउंड इट ऑफ। And don't worry, just be confident about your calculations in exam, whatever the answer. अभी तो हम चेक करेंगे, लेकिन एग्जाम में डोंट नीड टू चेक, लेट इट बी। 1734, 17 आई थिंक बहुत सारे लोगों का आ रहा है। 1.1714, 1333, तो उसी के अराउंड होगा। सबसे पहले प्रज्वल ने भी दिया था 1.1714। ओके 1.17 के अराउंड ही होगा जिसका वैल्यू। तो start to proceed to get y2। मेरे पास y1 का क्या वैल्यू है? y1 का वैल्यू है मेरे पास 1.1697 है मेरे पास, 1.1697, जो गायत्री, कृतिका, मतलब गायत्री का है मेरे, हाँ अथर्व का भी है, हाँ अभिजीत का भी है। 1.1697 इज माय y1 वैल्यू। मेरा k1 का वैल्यू है 0.2, k2 का वैल्यू है 0.167, k3 का वैल्यू है 0.169, k4 का वैल्यू है 0.1461, k का वैल्यू है 0.1697। चलो y2 अभी टाइप करो, y2 क्या आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? I'm having the value of y2 to be 1.30027. My value is
डन। चलो टाइप करो सब लोग, व्हाट इज द y2 वैल्यू, ड्रॉप योर आंसर्स इन चैट बॉक्स प्लीज। अरे Sir, 1.1305. ड्रॉप इन चैट बॉक्स प्लीज। y2 is read on y2। प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Sumit Punia, unmute your mic please. Sumit, are you there? Sumit, unmute your mic. Mr. Sumit Punia. Sumit just have logged in and may be sleeping. Do you know everything is there in the recording? वन पॉइंट 3029 3029 3030 तो हाँ सबका अराउंड 30 आ रहा है। ओके, प्रज्वल 1.3002, that is what I'm having. I'm having the value of y2 to be 1.3002 actually. Okay.
Chalo. Let's proceed with the next method. Okay, so y2 will be 1.30 something. Okay. We'll discuss the next method by sharing the screen. Okay, I'm sharing the screen. Okay. Is this visible? Yes, sir. Okay. So the next method is Euler's method to solve the higher order difference. See, we have discussed the Euler method, modified Euler, and RK method for the first order, first degree differential equations, isn't it? In fact, ordinary differential equations. But what about if the equation, what if the equations are higher order differential equation? Okay. So we have the methods to solve the higher order differential equation. We are discussing the method for second order, but we can generalize for the higher order, isn't it? So what the method says, please see here. Euler's method to solve the higher order differential equation. Okay, so we consider here the second order differential equation d2y by dx square equal to function of xy and dy by dx. Function of xy dy by dx. Just like suppose if I given the differential equation d2y, see here, it is given here, d2 2 times d2y by dx square equal to 3x dy by dx minus 9y plus 9. Okay, so I can write second order derivative is equal to the rest thing, and that is my function of x, y, and dy by dx. Okay, with the initial conditions given to be x is equal to x naught, y equal to y naught, and y dash at x naught, I'll denote it by y naught dash, because this is y dash, right? In fact, this right hand side function will be a function of x, y, and y ka derivative y dash. Okay, so function at initial conditions will be function at x naught, y naught, and y naught dash. So to solve such equation, we may take dy by dx is equal to z. So this is a substitution here. Dy by dx is equal to z. So when I differentiate this both the sides with respect to x, what will get second order derivative, that is d2y by dx square is equal to dz by dx. Okay, and to dz by dx I'll denote by function of, okay, this must be actually phi of xyz. Okay, sorry, this is f of xyz, and this will be phi of xyz. Z will be
Anyways, we'll discuss it in example. So this is this dz by dx will be again a function of x, y, z, isn't it? So given equation is of higher order is equivalent to system of simultaneous equation of first order, such as dz by dx is equal to f of x, y, z. You can see here dz by dx is equal to f of x, y, z. This is one differential equation. And second differential equation is this, dy by dx is equal to z. That I'll call it as a phi of x, y, z, another function. Is it clear to all up to this? किसी को doubt है? नहीं Actually we are solving or we are applying these methods to higher order differential equation. तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, higher order differential equation को first order differential equation में break कर रहे हैं. कैसे? Using the substitution dy by dx is equal to z. Okay, so dy by dx is equal to z will be my first order equation, first order differential equation, and with the help of this substitution I'll get dz by dx is equal to some function of x, y, z. That is second differential equation, right? So these two equations I'll solve simultaneously. What do you think? What should be the solution of these two differential equations? I have explained these things when we have discussed the simultaneous linear differential equation in first unit. What is the solution of simultaneous linear differential equation? Or what kind of solution it is? Do you remember? Any one of you? Yes? है कोई बताने वाला? इनका सॉल्यूशन, आई मीन किसी को क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ गया होगा. इसका सॉल्यूशन मतलब किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. द सॉल्यूशन विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? यस, z का and y का. Z. correct. The solution of differential equations are always the values of dependent variables. So here the dependent variables are z and y. Therefore, the solutions are, or the final values will be the function of or values of z and y, remember. Okay. So with these conditions, if h is the increment in x, that is the step length, then the values of y1 and z1 at x is equal to x naught plus h are given by these formulas by Euler's method. Z1 is nothing but, initially we have given z to be z naught, so z1 will be z naught plus h times function at x naught, y naught, z naught, and y1 again by Euler, y naught plus h times function, but this function is different, remember, f and phi at x naught, y naught, z naught. So इन्हीं को in general लिखा है, zn plus 1 is zn plus h times f of x and y and zn, and yn plus 1 is yn plus h times phi of x and y and zn. So this is about the method to solve the higher order differential equation by Euler or modified Euler or RK method also. We'll discuss RK method separately. Okay. So let us discuss this one example on this method. This is higher order differential equation given, second order in fact. Solve 2 d2y by dx square equal to 3x into dy by dx minus 9y plus y. Subject to the conditions y of 0 equal to 1 and y dash at 0 is equal to minus 2. Using Euler's method and compute y for x is equal to 0.1 to 0.4 with a difference of 0.1. Matlab h is given to be 0.1 and we have been asked to compute all the values of y from x is equal to 0.1 to 0.4. Is it clear to all? क्या क्या find out करना है? सर तो यहाँ y देखो। और z ही निकलना है ना. Yes, आयुष? y और z ही निकलना है. हाँ, y and z, yes. Actually z is nothing but what? Z क्या है? Z is the dy by dx. dy by dx. तो मतलब z is in terms of indirectly x ही है, isn't it? तो z कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नोटेशनली यहाँ y and z का फॉर्मूलाज दिया है. मतलब z is again a function of x and y is a function of x ultimately. ठीक है.
but we are showing these solution of this higher order differential equation in terms of 2 y and z always remember. क्लियर है सबको? तो यहाँ पहले मैं इसको स्टैंडर्ड में लिखूंगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को. स्टैंडर्ड में मतलब आई वांट द dy हायर ऑर्डर ऑफ the derivative on the left hand side and the remaining all things to the right hand side. So here 2 times है तो 2 को भी मैंने right hand side को भेज दिया. So that will be 3/2 x dy by dx minus 9/2y plus 9/2. Okay, and I'm considering this dy by dx to be z, isn't it? Dy by dx to be z, so that d2y by dx square will be dz. That we know, isn't it? So when we substitute z here, what we'll get? d2y by dx square is equal to 3/2 xz minus 9/2y plus 9/2, right? So dy by dx is equal to z with these initial conditions x naught, y naught and z naught. Sorry, x naught, y naught and y naught dash, right? So taking h is equal to 0.1, what we'll have? We'll write the formula first. Z1 का formula लिखेंगे हम. Z1 to be z naught plus h times f of x naught, y naught and z naught. Okay. तो z naught का वैल्यू क्या होगा बताओ आप? यहां से बता सकते हो आप. What will be z naught from here? z naught का मतलब क्या है यहां से? z is a function of x, right? तो z naught का मतलब क्या? z at x naught. But if we look at the left hand side, z at x naught क्या है? डेरिवेटिव है किसी का, y का डेरिवेटिव. So dy by dx at x naught means what? y dash at x naught. क्लियर है सबको? तो z naught is nothing but what? y dash at x naught. ये क्लियर है सबको ये बात? z naught is nothing but y dash at x naught means y dash मतलब -2. लेकिन ये बात क्लियर है ना सबको कि z naught is nothing but y dash at 0 or y dash at x naught. Please ask if any doubt. Okay, so z naught is -2, remember. So ये सब वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. What is f of x naught y? फंक्शन क्या है यहाँ? फंक्शन विल बी द कंप्लीट राइट हैंड साइड. तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ना z में, पूरा x एंड z में, x y z में, ये है हमारा फंक्शन. अगर आप इसको थियरी से कंपेयर करते हो, यू कैन सी हियर dz by dx is f of x y z, right? dz by dx को इक्वेट करके जो राइट हैंड साइड में होता है वो हमारा स्मॉल f ऑफ x y z होता है. एंड dy by dx को इक्वेट करके जो राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है वो हमारा होता है phi of x y z. इन दोनों को क्लियर कर लो प्लीज. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टू फंक्शंस. तो हमारा f ऑफ x y z क्या है यहाँ? 3/2 xz minus 9/2 y plus 9/2. तो f of x naught, y naught, z naught मतलब क्या? यहाँ x naught, z naught एंड y naught के वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ किया है. देखो अब f of x y z is given to be this, isn't it? तो at x naught, y naught, z naught value of the function is 0. देखो 0 कैसे आ गया? देखो 1.5 into 0 because x naught is given to be 0, z naught is -2. तो ये तो पूरा 0 हो गया. -4.5, y1 is 1 एंड ये +4.5, तो ये हो गया 0. तो इन सब को आप जब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं z1 के, तो क्या आ जाएगा? z1 इक्वल टू z नॉट ओनली बिकॉज f तो 0 है, तो z नॉट है हमारा -2. तो z1 भी हमारा क्या आ गया? -2. हेलो, एनी डाउट? ओके. नाउ z1 के साथ हमें y1 को भी फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें पेयर फाइंड आउट करना है. आप लोग समझ रहे हो? हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि कंप्यूट ऑल वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम दिस टू दिस. मतलब x इज इक्वल टू 0.1 टू 0.4 तक हमें सब वैल्यूज ऑफ y भी फाइंड आउट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग z को भी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ तो हमें z1 मिल गया, करस्पॉन्डिंग y1 भी मिल जाएगा. y1 इज नथिंग बट व्हाट? y नॉट प्लस h टाइम्स phi ऑफ x नॉट z नॉट. बट phi इज नथिंग बट व्हाट? z. मतलब आप देख सकते हो phi ऑफ x y z क्या होता है थियरी में? देखो आप यहाँ देखो, phi of x y z is z, right? तो phi of x नॉट, y नॉट, z नॉट क्या होगा? z नॉट ओनली. ये बात क्लियर है सबको? z नॉट. phi is nothing but z. तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y1 will be y नॉट प्लस h टाइम्स z नॉट.
we have the values of z0, y0 and h. उनको सबको substitute कर दिया. I'll get y1 to be 0.8. So this is a pair actually. y1 is 0.8 and z1 is to be -2. इसी तरह से z2 भी find out किया मैंने. अभी मेरे पास y1 है, z1 भी है. So I'll find the function value at x1, y1, z1, isn't it? And then I'll substitute that value into this formula to get the value of z2 to be -1.94. And similarly y2 will be y1 plus h z1. तो z1 का भी वैल्यू है मेरे पास, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया and I'll get to be 0.6. Similarly z3 y3. Similarly z4 y4 and ऐसे मैंने टेबल में लिखा इसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. तो ऐसे एग्जाम्पल की पॉसिबिलिटी है दिस टाइम for 5 to 6 marks. Okay, so you should know this also. In earlier 2015 pattern there was no question on this topic, but now here there is a possibility because of marks. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, सर थोड़ा लिखते टाइम कंफ्यूजन होता है क्योंकि एच और एक्स कब बदलने, एच वैसे के वैसे रखना है ना. हाँ, Point h one will be point. same. Yes, point खाली मतलब x h is the step length. हाँ, हाँ x को क्या कर कभी रहे हैं हम? x वो का ऐड h करते जा रहे हैं h को. हाँ सर. मतलब x1 is x0 plus h, x2 will be x1 plus h, है ना? ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा. आप लोग एक बार खुद से करके देखो कि क्या होता है, डायग्राम निकाल के, then you'll come to know what is the logic behind this and all. Exactly. हाँ सर. सर खाली देखने से अगर नहीं. हम फिजिकल होते उधर तो हाँ फिर हाथ से भी जाता ना बहुत ज्यादा, हाँ, राइट. तो फिर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. इधर वो ऐसा बात तो है, लेकिन थोड़ा अभी नहीं है ना. डर लगता है थोड़ा. नहीं, कोई बात नहीं. We'll be prepared. Don't worry. Most probably the exams will be online only, and then मतलब multiple choice question based होगी. But ऐसा कुछ circular भी नहीं है, तो we'll prepare for the theory as well as MCQ. बस उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. Don't worry. नेक्स्ट मेथड है, अभी ये जो आरके मेथड है ना फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सिमिलर टू दिस ही है, इसके जैसा ही है. यही नहीं है, इसके जैसा ही है. मतलब क्या है, यहाँ देखो आप लोग, रंज कुत्ता मेथड टू फाइंड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. आपने देखा होगा, मतलब हमने ऊपर क्या देखा कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पहले ब्रेक किया इन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, isn't it? And we have got the bunch of simultaneous differential equations and उन दोनों को हमने सॉल्व किया. तो यहाँ भी ऐसा ही केस है, यहाँ हमें डायरेक्टली दिया है simultaneous differential equation and इन दोनों को हम आरके मेथड से सॉल्व करेंगे. तो जब आरके आता है तब केस भी आते हैं, है ना? नंबर ऑफ केस and always 4 केस will be there. यहाँ सिर्फ इन एडिशन क्या है, केस के साथ और 4 स्टेप लेंथ आ गए. मतलब के जो है वो एक्चुअली स्टेप लेंथ के जैसा ही है, तो उनके साथ एलाइज भी आ गए, L1, L2, L3, L4. आप देख सकते हो यहाँ कि will be asked to solve this 2 simultaneous differential equations with the initial conditions y at x0 is equal to y0 and z at x0 will be z0. Starting with initial conditions, let me check how many, 35 students. Okay, starting with the initial conditions x0, y0 and z0, taking step sizes for x, y, z to be h, k and l. See, don't get confused with the formulas here. The formulas will be more clear while discussing the example. Okay, so starting with the initial conditions x0, y0, z0, taking step sizes x, y, z, step sizes for x, y, z to be h, k, l respectively. मतलब x का step size क्या है, h, y का step size will be k and z का step size will be l respectively. Okay, so with the help of these k1 का value होगा first k, first कुत्ता है जो हमारा, k1 will be equals to h times f of x0, y0, z0, and along with that L1 will be h times phi of x0, y0, z0. तो ये जो f है and phi है, these two are the different functions. Remember, f and phi
सिमिलरली K2 होगा h टाइम्स f ऑफ x नॉट प्लस h बाई टू y नॉट प्लस ये प्रीवियस k जो है उसको यहाँ ऐड करेंगे k1 बाई टू प्लस z नॉट प्लस l1 बाई टू। एंड ये जो कोऑर्डिनेट है K2 के सेम कोऑर्डिनेट हो गए L2 में। देखो आप लोग सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली K3 K4 के लिए भी है, जैसा जो कोऑर्डिनेट K3 में है वही कोऑर्डिनेट L3 में है, K4 में जो कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट L4 में है। आप सिर्फ चेंज देखो, यहाँ फर्स्ट ऑर्डिनेट में कहीं भी चेंज नहीं है। आप देख सकते हो x नॉट प्लस एच बाई टू, K3 में भी x नॉट प्लस एच बाई टू, सिर्फ K4 में क्या है x नॉट प्लस एच, which is very similar to the K4 which we have discussed earlier. K4, what was the formula for K4? h into f of x naught plus h y naught plus k। वैसा ही है, सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ ऐड हो गया है z वाला। सही है, तो यहाँ तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं है, सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में चेंज है। देखो आप लोग K1 में जो है, K1 में y नॉट है, K2 में क्या हो रहा है y नॉट प्लस K1 बाई टू, K3 में क्या है y नॉट प्लस K2 बाई टू, एंड K4 में क्या है y नॉट प्लस K3, एंड सिमिलरली सेम थिंग इन L1 L2 L3 L4। तो इस तरह से आपको 4 Ks and 4 Lis मिल जाएंगे, 4 Kis and 4 Lis, and with the help of same formula k is equal to 1 by 6 times K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4, and L is equal to 1 by 6 times L1 plus 2L2 plus 2L3 plus L4 with the help of K and L, will write the final solution is to be y is equal to y naught plus k and z is equal to z naught plus L। समझ रहे हो बात? सिमिलर है जैसा कि हमने आरके में किया ना फोर्थ ऑर्डर, वही है, सिर्फ एक वेरिएबल ऐड हो गया है यहाँ z वाला, एंड उसकी वजह से कैलकुलेशन भी थोड़े से ऐड हो गए, ज्यादा हो गए, लेकिन सिमिलर है, फॉर्मूलाज भी सिमिलर है, तो इसलिए याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज इन द फॉर्मूलाज, सो दैट वी विल डिस्कस द एग्जांपल। इज देयर एनी डाउट विद द फॉर्मूलाज? हेलो? नहीं सर। No, sir. See, the remark is second order differential equations can be broken up into system of simultaneous first order differential, that we have seen earlier, right? In Euler's, we have broken the second order differential equation into two first order differential equations, and then we have solved both of them simultaneously, isn't it? And we have got the solution as a value of y and z. So that is what this note says, remark says, second order differential equation can be broken up into system of simultaneous first order differential equation of the above type and can be solved using the formulas above. Okay, so I'll send the example on this with solution. Shall we proceed with the next method or should I stop here? What do you think? Yes? Sir, Shall I stop here? how much is remaining? How much? This is the last topic actually, predictor corrector method. And मतलब यही है predictor corrector and one more method in addition. मतलब इसी में है, predictor corrector में ही है one more method. But I think actually this is the only point added into the new syllabus, predictor corrector method. This was not there in the last 2015 pattern, this method, this predictor corrector, and that is very important, I think, because definitely there will be a question on this method in theory, if the theory exam is there. Sir, anyhow. I think this is the, see here, this is the example on this earlier method we have discussed, RK method for simultaneous first order ordinary differential equation. ये है एग्जाम्पल, ये एक्चुअली मैंने पेज पे पेज रखा था और उसको स्कैन किया तो ये उसके नीचे वाला पेज स्कैन हो गया शायद। ये एग्जाम्पल है, ऐसे यूजिंग आरके मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दीज टू सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। एक काम करो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन फॉर्मूलाज का, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, एंड देन
use these formulas to solve that question. I'll give that as a homework. और थोड़ा सा सर आपने ये पीडीएफ शेयर की है? हाँ, मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है ना। हाँ, ओके, हाँ। मैं तो भूल गया। हाँ, तो फिर ये एग्जांपल सॉल्व करो इसके साथ, इन फॉर्मूलाज के साथ। आएगा ना? किसको डाउट है फॉर्मूलाज यूज करने में? आपको क्या करना है, ये के आईज एंड एल आईज के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इस फाइनल के एंड एल में सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, के एंड एल 1/6 टाइम्स, ठीक है। सो यूल गेट के एंड एल and substitute that k and l into this y naught plus k and z naught plus l. That will be the solution. That's it. ना ये देख लो एक बार, otherwise we'll discuss in the next lecture. I think in next week. Okay, one more thing. I'm thinking to have a last review on our project. Actually, I was about to have the review on the 30th of the last month, but because of your unit test and some other work, I could not manage the time. But now I'm thinking to have the last review of your project and then submission also in next week. Is it okay to all? I hope you all are prepared with the final presentations, because you have given in the last review, you have given the tentative dates also, and definitely 15 to 20 days in addition you are getting. So what okay did to all? you say? Huh? So what did you say? Date I'm not saying, but are you comfortable in the next week for the presentation? All right. Is it okay to all? Yes, No. sir. Okay, everyone please do reply in chat box about the presentations. Is it comfortable in the next week? If it is, then I'll fix the date and let you know. Cramer's rule. Atharv, what are you asking about? I'm not getting. So simultaneous का बोल रहा था LD. No, we don't have to use the Cramer's rule here. Okay, acha, right. We have discussed in the first unit about the Cramer's rule. Anyways, please write in chat box. Are you ready to give the presentations in the next week? Most probably on Monday only. There will be 2 to सैटरडे 3 का भी चलेगा क्या? मंडे या सैटरडे चलेगा? सैटरडे को छुट्टी है, इसलिए मैं तो I was thinking to plan on Saturday, but this Saturday is the first Saturday, right? And we'll be having a holiday. सर ये नहीं, अगला वाला सैटरडे. Next Saturday को डेट क्या है? What is the date? I think So next Saturday, I think holiday. holiday. That is what, Diwali holiday, right? सर दिवाली के बाद लिया तो दिवाली के बाद नेक्स्ट सैटरडे अरे को बाद में अथर्व पीबीएल का भी है 25 तारीख को. वही तो हो जाने तो कोई बात नहीं. सर नेक्स्ट वीक 13 तक ले, 13 में चले. देखो आयुष, मतलब 12 से छुट्टी है, हम लोग 11 से ही भाग जाएंगे कॉलेज से, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से हम भी घर पे नहीं गए. सो आई एम थिंकिंग टू टेक इट 9th, 10th और 11th, मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे. देखो आप लोग, अगर नहीं है कंफर्टेबल तो देन विल हैव टू प्लान आफ्टर दिवाली ओनली. श्वेता इज सेइंग ऑन ट्यूसडे. हाँ सर, दिवाली के बाद ही ले लो. दिवाली के 11. बाद. अरे दिवाली के बाद बहुत हो जाएगा. वही तो, मतलब उतना इफेक्टिवली नहीं दे पाओगे फिर आप लोग. और एक बात है कि आपको मतलब एक्सपर्ट भी आएंगे यहाँ आपके प्रेजेंटेशंस के लिए, एक्सपर्ट भी होंगे, ठीक है. मार्क्स भी मिलेगा आपको. 9-10 चलेगा कोई सर. महेश कोपे आफ्टर दिवाली. प्रज्वल इज रेडी 11th को. चलो मैं देखता हूँ आप मतलब जिन जिन लोगों ने अभी वोटिंग किया है ना, उनमें से देखता हूँ किसका ज़्यादा है, मतलब इन द नेक्स्ट वीक और आफ्टर दिवाली. आफ्टर दिवाली तो
2-3 लोग ही बोल रहे हैं. I'll fixed. बट हमारे शेड्यूल में नहीं होगा वो, हाँ? मतलब शेड्यूल के बाद ही होगा, लेक्चर शेड्यूल के बाद ही होगा. Come on fast, do सर reply in ये वाले chat के box बाद and then. होगा ही नहीं सर, नहीं पॉसिबल हो जाएगा नहीं सर, क्योंकि बाद में एग्जाम आएंगे, फिर बाद में